all, this is Simrita Basroor. Today I thought of talking to you all about assumptions. Assumptions, presumptions, ये सब क्या है और इससे कितनी हानि होती है और क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम हो जाता है. You need to understand that human behavior and human mind go hand in hand, alright? Because your thought process and your actions, that is your behavior, will always be intertwined. Whether you do that behavior before thinking or you do it after thinking. So let us see what this assumptions is all about. Now when I researched on this topic, I came to know that yes, there was a particular time in every person's life also, and if you go to see history, there was a time wherein assumptions and presumptions were just at the edge of the society, and history mane, it's not just our history, it is on the global front completely, it's everywhere. सो ये थॉट प्रोसेस जो होते हैं इसलिए उनका आप उन्हें इमेजिन कर सकते हो या फिर ड्रीम्स आते हैं या फिर उसके बारे में आप कुछ कर सकते हो एंड इट इज़ ऑल विद इन यू, इट इज़ ऑल इनसाइड यू. सो यू नो इट दैट्स व्हाई इट स्टेज इन द बैकग्राउंड एंड दैट्स व्हाई दीज थॉट्स कीप ऑन हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन रीजन्स. नाउ अजम्पशन मतलब समथिंग यू अज्यूम और यू प्रिज्यूम, यानी एक पर्टिकुलर थॉट जो आपको लगता है कि हो सकता है या हो पाएगा. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द ग्राउंड रियलिटी अनलेस एंड अनटिल द बिहेवियर हैज़ बीन डन. अंडरस्टैंडिंग? सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली द एक्शन, मतलब एक एक्शन होने के बाद कुछ आपने रिजल्ट सोचना या फिर कॉन्सिक्वेंस सोचना और एक्शन होने से पहले उसके बारे में सोचते रहना. सो ये अजम्पशंस या अज्यूम करने की वजह से ओवर थिंकिंग फिर बढ़ जाती है. सो इट्स लाइक अ साइकिल, कंटिन्यूअस साइकिल कि हाँ अभी ये सोचा तो ये होगा, ये सोचा तो ये होगा, ऐसे. नाउ डू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू डू एनीथिंग एक्सेसिवली इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. तो चाहे वो हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो या हद से ज़्यादा नेगेटिविटी हो, हद से ज़्यादा ब्लिसफुलनेस हो या हद से ज़्यादा पेसिमिज्म हो. इट कैन बी एनी थिंग, यू नो. सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अ नेचर्स लॉ. These all things are above our mind, above psychology. So you need to understand this. It's very serious thing that when you keep on assuming things, when you keep on thinking it over and over in your head and it has become a consistent habit, there will come time wherein you will fear every little thing. और ये researches में भी कहा गया है. Remember always that balance is very much important. कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आप कुछ भी सोच रहे हो तो इतना भी हद से ज़्यादा नेगेटिव मत सोचे कि वहाँ पे पॉजिटिविटी की गुंजाइश ही ना हो, पॉसिबिलिटी ही ना हो. देन यू नो इट बिकम्स अ बिट tedious, it becomes more depressing than you ever can really imagine. When it comes to even eating, like what you're eating, how you're eating, this I've been telling in my videos also every now and then that psychology मतलब सिर्फ एक ही दिशा नहीं होती है. आपका थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, सब कुछ आपके खाने पे भी असर करता है और वाइस वर्सा. आपका खाना आपके थॉट प्रोसेस और आपके बिहेवियर पे भी असर करता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अजम्पशंस किस हद तक और कितना कर. नाउ आई लीव इट टू यू whether you want to keep on assuming things or whether you really want to do something about it or you don't want to do anything about it, because it's in the end it's your life, it is your choice. जो भी आप डिसीजन ले रहे हो सर्टेन पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से होते हैं, कुछ लोगों के वजह से होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स को भले ही हम कितना भी बोले कि इट इज़ जस्ट 10% एंड इट इज़ 90% इन आवर हेड, but still that 10% at times when it becomes consistent it becomes very toxic and you cannot deny someone else's treatment towards you simply because he or she is having a certain social status or having a certain age gap or of a particular gender. You know, all these things get sidelined when you understand and you want to connect human to human. That is more important. Meditation, yoga, or even going for counseling will naturally help you, but again you have to be consistent in your behavior towards it or in your practice towards it. Only then it will benefit you when you really work on yourself or think of at least working on yourself. That will benefit.
So that's all. Remember these three key points. That is, first is past experiences, second is emotional safety, and third is all these ways which we already know: meditation, yoga, or going for a counseling. Do understand that of all this, you need to first be kind to yourself. That know that yes, for a particular reason, you might be having a second thought about a particular occasion or a particular person, or even for yourself for that matter. But know that along with that, you can really do something about it. Give yourself time or do some self-care activities. Sleep, rest, take a nap, power nap if it's too much is going on in your head. Give your brain rest. The more rest you give to your brain, the more it will be able to activate itself. So thank you very much for watching this video so patiently. I hope you understood every angle I have talked of on assumptions. Do know that too much of anything is bad, and again it is your choice कि आपको कहाँ पे वो कुछ thought process या कुछ behavior use करना है, and taking full responsibility of it becomes necessary, instead of blaming others and blaming self as well. You need to first learn to be kind to yourself, and then you can eventually or by default be kind to others. It helps that way. So try and see how you are, keep your mental health